अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम sorry, I'm just saying wisdom bites because we have another show with the name of wisdom bites also. Hall of the Fame के रेफरेंस से हम उन लोगों के इंटरव्यूज करते हैं जो बेसिकली जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है या उनमें पैशन है और वो लोगों की लाइफ को चेंज करने में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं इन सम वेयर समहाउ। इस सिलसिले में हमने रिसेंटली सलीम अख्तर का इंटरव्यू किया था जो कि नवाफिस के स्टार हैं। ही हैज मोर देन लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज एंड टुडे वी हैव जोया उस्मान विद अस। शी इज द फाउंडर ऑफ माई परसूट पाथ and she is very well experienced in HR, in consultancy and other factors. So let's welcome Zoya Usman. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam and assalamu alaikum to everyone. Thank you, Liaqat Bhai, for providing me this platform to come and speak about my personal and professional life as well as talking about my challenges. I would love to talk about that. Thank you very much. Great. So starting with my very first question or very basic points or very basic thing, I just want to know basically who is Zoya? How we will introduce or in the basic sense के जोया उस्मान जो है वो उनकी अर्ली लाइफ जो है उस और बेसिक एजुकेशन जो है उनका उसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे है? Bilkul. So currently you guys know that I'm working as HR consultant. Also recently I started my platform of my pursuit path as a career advisor. Also I'm associated with Navafiz as career mentor. अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं, so I basically did pre-medical. अगर मैं अपनी FSC की बात करूं, starting from the very initial time period. So I belong to a family is very educated, mashallah. I have got my siblings who are doctors and engineers, and mostly in my family, my cousins, PhD holders, and these kind of siblings I have in my family. तो मेरा भी कुछ इसी तरह था. I always wanted to become a doctor. I wanted to do MBBS. तो I was kind of like very studious child जो हमेशा से पढ़ाकूद बच्चा जिसको कहते हैं, पढ़ाई में करने वाला और हर वक्त मार्क्स के अच्छे ग्रेड्स आए, because you have to have a specific percentage to get into the medical college, right? तो सारी मेरी जो basic education है, it's basically from Pakistan. I did my schooling from the city school. It was, I think, back in 2002, 2003 that I was studying over there. But not the entire education is from the city school. Then I did not do OA levels. I just did the normal FSC and matriculation. That's how I did. I got very good grades, but even then I wasn't really able to get into MBBS. So then I remember that there was a challenge. There was a time period जहाँ मैंने काफी regret किया, because I was a really studious or committed sort of kid. Always wanted कि मुझे कुछ करना है life में, doctor बनना है. You know how culture is, and our families of Pakistan में ज़्यादा इन चीज़ों पे या तो engineer होते हैं या doctor होते हैं. That's how my family was as well. But somehow, जब मेरा नहीं हो सका, I tried my level best. So I decided that I would go to MBA or I'll do BBA, And that just came into my mind. I said, no, now I'll completely change my field. Though I had options कि मैं BS कर लूँ chemistry में, physics में, because that was more relevant to my studies जो मैंने आज तक पढ़ा था. अब BBA business was an entirely different field for me. But I did my BBA honors. It was 4 years from Bahia University, Islamabad. And I remember कि मैं जब किसी को बताती थी, and people used to ask me कि आप क्या कर रहे हो, अब आपका medical में नहीं हो सका, so what is your plan? Next plan क्या है आपका? So I used to say कि I'll go for BBA, I'll go for MBA. So I remember still कि लोग मुझे कहते थे, मेरे पेरेंट्स को कहते थे, what is you doing? Like, BBA ये तो नॉर्मल सी स्टडी है, फन में हो जाता है, इसमें क्या पढ़ाई है, ये तो बस ऐसी मतलब पढ़ाई का मतलब वो एक मजाक है, that's how people used to, still I think people they talk like that. Even my brother and sister, they are engineer and doctor, mashallah, but still they say,
what you guys are doing, you know, making videos and you know, doing presentations and these kind of things. उनके भी होता है, but it is very limited. तो मैंने ये सारे comments सुने, feedback सुनी लोगों की. It affected me to some extent, but not to a very great extent. Still, I said, no problem. I'll do something from scratch and I'll go into it. अच्छा, जब मैं start करना शुरू हो गई, when I came into BBA, तो everything was like an alien to me. You know, marketing के concepts हैं, economic के concepts हैं, business की चीजें हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा. मेरा बिल्कुल एक biology वाला background है, chemistry, physics के concepts हैं. अब वो जो मेरे साथ colleagues हैं, they are coming from AO level backgrounds. They still have some, you know, I would say rudimentary concepts of accounting and you know, marketing. अब मैं उन्हें देख रही हूँ, they have a very, you know, smooth flow in those subjects, and I'm trying my level best. Still, I'm not able to get the GPA that I want. And apart from that, I would also like to mention here that I'm not a born public speaker, and I wasn't good at presentation at all. जब मैं first 2 semesters थे मेरे, when I started my BBA, तो you know, I was that kind of person कि वो जो stage fright होता है ना, जब it wasn't like that कि मेरे पास words नहीं थे, vocabulary नहीं थी. I had all the foundation, everything, but then when I used to come in front of the people, जब मेरी class के सामने भी मुझे आना पड़ता था, I used to forget everything. तो वो एक, you know, मैं distract हो जाती थी, अपने topic से हट जाती थी, and sometimes तो ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल ही खामोश हो जाऊंगी और बस. तो वो it was a kind of embarrassment क्योंकि at university level, at the very initial semesters, you know, and once you have your colleagues as well sitting in front of you, तो वो ज़ाहिर बच्चे मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, comments भी pass कर रहे होते हैं, तो it was a very challenging time for me. But then I would say कि मैंने उसको कभी भी अपने ऊपर इस तरह से personally नहीं लिया कि मैं demotivate होके बैठ जाऊँ, मैं कहूँ कि यार ये तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं इसको कभी groom कर ही नहीं सकती. Then I started working on that. I said no. अब उस दौरान मेरा GPA भी नीचे जा रहा है, 2 point something like that. It is going. I'm trying my level best, not, you know, getting good GPA at all. Accounting के concepts हैं, तो उसमें मेरे exam से marks कम आ रहे हैं, हर चीज में. अब मैं अपने friend से कह रही हूँ कि I feel like I cannot do this. I have to change my field again. तो मेरे friends ने मुझे motivate किया, उन्होंने कहा Zoya, give yourself some time. 3rd, 4th semester तक जाके you will be fine. So let's, you know, just give yourself some time. I said, okay. Then what happened was that मैंने कहा कि अब मैं books उठाऊंगी scratch से. Accounting की book मैंने उठाई. मैंने उसके सारे concepts जो बिल्कुल ABCD वाले concepts होते हैं, शायद वो मेरे colleagues तो उस तरह पढ़ते भी ना हो, मैंने सब उठा के पढ़ना शुरू कर दिया. अच्छा, ये definition है, liability है. What do you mean by liability? What do you mean by asset? ये क्या होता है, ये क्या होता है. मैंने इस तरह से अपनी नॉलेज बिल्ड की और साइड बाय साइड हमारे इंस्ट्रक्टर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मैं अपना भी पढ़ रही हूँ घर में और बहुत ज्यादा उस पर फर्दर रिसर्च कर रही हूँ. I remember that in 3rd semester my GPA it rose from 2.8 to 3.75, and it was a surprise to everyone. People, I'm talking about Bahia University, my colleagues, they जो मुझे जानते थे, जिनको पता था कि she is trying her level best, but still she is not getting what she deserves, बहुत खुश हुए. Then I realized कि no, this is something I can do. बस थोड़ी सी effort की जरूरत है. वो जो मेरा GPA आया था ना 3.75 3rd semester में, उसके बाद गिरा नहीं. उसके बाद वो elevate रहा, and I remember कि 3.9 3.9 and 8th semester में वो कभी ना कभी 4 से मेरा रह जाता था. लास्ट सेमेस्टर जो मेरा था 4th ईयर की मैं बात कर रही हूँ, 8th सेमेस्टर जिसमें लोग को मुश्किल भी लगता है यार लास्ट सेमेस्टर में कौन ले सकता है. I was a 4 GPA holder and my CGPA was very good. And my name was in the honors list. My name was in the dean's honors list while I did BBA from Bahia. And based on that, I got admission in NUST Business School for MBA. अच्छा, यहाँ से मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने अपनी presentation skills पे कैसे groom किया. 2nd, 3rd semesters तक I wasn't a good presenter. मैंने अपने ऊपर इतना काम किया, मैं अपनी मिरर प्रैक्टिस करती थी. जब भी हमारी प्रेजेंटेशंस होती थी, I used to see myself in front of mirror. मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ.
used to record my communication. यानी जब मैं बात कर रही हूँ, speak कर रही हूँ, when I'm speaking, so I used to record it and I used to listen to it कि मैंने क्या वहाँ gaps किए, क्या मेरे flaws हैं, और उस पे मैंने बहुत ज़्यादा ये किया, बहुत ज़्यादा. उससे then I saw, you won't believe it, that in the 4th semester I remember कि हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने फीडबैक ली क्लास से कि who is the best presenter, यानी कुछ लोगों के नाम दें जो कि बेस्ट प्रेजेंटर्स हैं क्लास में. So मेरे colleagues they my name was highlighted there that Zoya, she is the best presenter of her class, alhamdulillah. And that is, I feel that was my achievement, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मैंने कभी presentation नहीं की थी, मैं घबराती थी बहुत ज़्यादा कि मेरी आवाज़ भी बिल्कुल बंद हो जाती थी. And then there was a moment कि जब लोग कह रहे थे कि she is the best presenter of her class and topper as well. So, you know, that's how I worked on myself. So this is my very basic education. If I talk about कि BBA में मेरे क्या struggles थे और किस तरह से मैंने अपने आप को groom किया. Then further अगर मैं चलूँ तो then I did MBA from NUST. वहाँ से I always dreamt कि I want to get admission in NUST. ठीक है, मैंने अपना MBA NUST Business School से करना. So I was very good great. in, you know, NUST is in Pakistan or in here in UAE? No, I'm talking about NUST University, NUST Business School. It's in Karachi as well as it's in Islamabad. Sorry, क्योंकि उसका मुझे आइडिया नहीं था, तो इस वजह से. Yeah. आपका इंट्रोडक्शन इट्स गोइंग ग्रेट. इट्स जो आपकी बेसिक जर्नी है, इट्स रियली इंस्पिरेशनल एंड काइंड ऑफ स्ट्रगल इज देयर एंड ग्रेट लेसन इज देयर कि देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट. अक्सर लोग नाउमीद हो जाते हैं कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ. they limit their capabilities, but there is always chance of improvement. बिल्कुल. यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए we have Wasim Raja also with us. Welcome Wasim. Assalamu alaikum. First of all, welcome to Hall of Fame. बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, अपना प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे साथ जो आज लाइव सेशन कर रही हैं. So thank you so much for your precious time. Thanks to you for welcoming me. Thank you very much. Right. So Zoya, I will just move to a little bit light mode question first, and then I will come to a bit tough questions. During your school time or जब आप basic education में थी, you were kind of a shy girl or naughty student? I was a very reserved sort of student. Shy, reserved, not shy. इससे मैं नहीं डरती थी कि अपने आप को present करना है या कहीं बोलना है, but reserved student. बहुत ज़्यादा open और networking वाला बच्चा मैं नहीं थी. Right. I would just like to know, normally हर बच्चे की बचपन में ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं छोटा होता सोचता था मैं बड़ा होकर साइंसदान बनूंगा. And then it evolved. Then I thought I will be going to aeronautical engineering, and then gradually I just came to the field of electronics. What was your childhood dream? As I said, I wanted to become a doctor. MBBS. I wanted to do MBBS. Yes, so somehow I couldn't do it, but yeah, that was my dream. Right. अच्छा जोया, मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा जो कि व्यूअर्स को भी मालूम होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने शायद तालीम भी हासिल की थी अबू धाबी यूनिवर्सिटी से, राइट? जी बिल्कुल. ठीक है. सो आपने वहाँ से क्या तालीम हासिल की थी? जी, I graduated in 2019 from Abu Dhabi University. I did MBA in HR from there. जी, मेरे core subjects हैं. I studied about UAE labor laws, HR practices in global environment, and training and development. So these are my majors. My question is, what's the major difference in the higher education system between Pakistan and UAE as per your experience? मतलब आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है? जी वही मैं उसी पॉइंट जी एक्चुअली the thing is that मैं एक्चुअली नस्ट में ऑलरेडी MBA कर रही थी. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, नस्ट बिजनेस स्कूल इस्लामाबाद से. तो इन द मिडल ऑफ दैट I got married and somehow I had to go to UAE, and then I decided कि मैं अपनी studies वहाँ continue करूँगी. So the difference that I would say is that NUST जो university है, it's backed by army, तो उनका बड़ा tough
culture है, it's a relative grading system, and I was studying with the gold medalist of all the universities across Pakistan, the top cream जिसको आप कहते हैं. तो वो मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग के टाइम था, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट थी जिसमें मैं पढ़ रही थी. अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो आई वुड से कि जो मैं पाकिस्तान से जिस एनवायरनमेंट से आई, आई वाज ट्यून टू वर्किंग इन अ चैलेंजिंग सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, हार्ड वर्क करना. तो जब मैं यूएई आई तो यूएई इज दे आल्सो हैव सम पर्क्स, देयर एजुकेशन सिस्टम जैसे उनका बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है. दे वोंट मूव टुवर्ड्स समथिंग न्यू until they are satisfied या they are sure कि जो उन्होंने currently एक स्टूडेंट को एक चीज पढ़ाई है वो 100% क्लैरिफाई ना हो जाए. तो जब मैं उस तरह के इन्वायरमेंट में ट्रांजिशन हुआ मेरा, सो इट वाज अ वेरी स्मूथ फ्लो ना, तो मुझे तो बड़ा वो आसानी से मैं उसमें एडजस्ट कर ली, क्योंकि मैं तो एक बड़े टफ इन्वायरमेंट से आई हुई हूँ. सो द डिफरेंस आई वुड से कि यही है कि पाकिस्तान ने मुझे एक टफ और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर कर दिया था, और वहां जब मैं आई तो मुझे जरा फ्लेक्सिबिलिटी दिखी, मुझे रूम फॉर आई वुड से एक्सप्लोरेशन मुझे जरा ज्यादा मिली, बिकॉज वहाँ ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल. आई वाज एबल टू एक्सपीरियंस दोज पर्सनली, क्योंकि पाकिस्तान में भी हैव लिमिटेड एक्सेस टू दोज, राइट. और दूसरा ये कि हम बिजनेस में भी वही बिजनेसेस को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज जब मैं रिलेट कर रही थी तो इट वाज वेरी गुड for my understanding of, if I specifically talk about the business concepts that I was studying over there. तो वो जो मैंने MBA उधर किया है, it really added to my learning. जो मैंने UAE में आके किया है, जो completion किया है, I took around 9 subjects over there. And also I would say कि I interacted with instructors from different countries. I had instructors from Malaysia, Egypt, I had from Ireland, throughout the world. ठीक है, तो वो all parts of the world से जो इंस्ट्रक्टर्स थे, और ऑल्सो जो एक लोकल लोकल्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और एक नए कल्चर में मैं आई, आई रियली फेल्ट गुड. आई फील कि उसने मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प की है. once you go into a new culture तो आप काफी सारी चीजें सीखते हैं, और ये कि एजुकेशन में तो डेफिनेटली इट है. Alhamdulillah, so I did MBA with distinction. Highest distinction from Abu Dhabi University. I'll move to next question. मेरा जो next question वो ये है आपसे, जो कि हमारी audience से जो viewers हैं वो जानना चाहते हैं कि after completion of your degree from Abu Dhabi University as an MBA HR, so how did you start your career and what was your job and strategy? मतलब आपने कौन से methods आपने apply किए और आपने career किस तरह से आगाज किया? Okay. Career, basically, I won't say that my first job was working as HR consultant. Basically, जब मैं UAE आई थी तो उस वक्त I was already studying. So in the middle of my MBA, I started doing work. So I always had the feedback that I can teach. मेरे friends मुझे कहते थे you have that capability, you can teach in a very good manner. So try going towards that direction as well. तो मेरी strategy जो very first थी, जो मेरी first job थी, that was an English language trainer. And I also was affiliated with one of the institutes over there. It's from US. It's by the name of Sylvan Learning Institute. It's in Abu Dhabi. तो मेरी strategy ये थी कि I used to call training centers, क्योंकि मुझे full time job नहीं करनी थी उस वक्त, because I was studying as well. So I couldn't really have a balance between my personal life. I was married as well, तो मुझे अपना घर भी देखना था, मुझे पढ़ना भी था. Very difficult, definitely. तो so I was flexible कि मुझे एक short term commitment मिल जाए और मैं उसको कर लूँ. तो I basically, अगर मैं बात करूँ मेरी first job क्या थी, तो वो थी teaching की. तो मैं training institutes को call करके पूछती थी if they require any trainer or if they have any vacancy. तो वो बड़ी strategy मेरे काम आई, क्योंकि they used to have vacancies and they right away they used to tell me yes we are looking for one. तो वो फिर वहीं से मुझे requirements बता देते थे, and क्योंकि मैं already उनसे communicate कर रही होती थी call पे, तो they could assess my communication skills, the way I'm talking to them. तो वहीं से if somebody is interested they would call me. तो वो कह देते थे आप आ जाए, इंटरव्यू है आपका इस दिन, and we can take it forward from there. So that's how I started my career. HR consultancy जो है that I started
also when I was doing MBA, but after that, after this teaching experience. तो वो जो है, it was basically through networking. वो मेरे husband के link से, yeah, he knew somebody, and he was basically chief HR consultant with Sundus. So he was basically looking for some people. उनका एक project आया था government का, Abu Dhabi government का. तो उन्होंने कुछ उस पे, you know, they wanted to make a team as soon as possible, and they were looking for people जिनका HR background है, communication skills अच्छे हैं, because they had some people from US and other countries in their team. So they wanted के, you know, you should be having good communication skills. तो ये दो उनकी core basics थी, तो उस पे उन्होंने based on that they analyzed me. अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज mention करना चाहूंगी कि मैंने वो start as a volunteer किया था. I did not, yeah, उन्होंने मुझे शुरू में pay नहीं किया, but then I just, you know, I was sitting there till late at night, till 12, जब हमारी कोई presentations हैं, stakeholders के साथ meetings हैं, and then I remember कि after like 20 days, they said कि we want to take Zoya on permanent payroll. That was also a good idea कि आपने as a volunteer start किया, जिसके बाद जो है आपको अच्छी opportunity मिली आपके attitude, आपके काम की वजह से. So इसके अलावा जो आपने कोई job portals जो है या LinkedIn या कोई और social media का कोई platform use किया था आपने job hunt जब आप मैंने किया जरूर था जी, बिल्कुल मैंने किया जरूर था, but from there I was receiving calls for internships. मैं internships के लिए I was really applying at that moment. So yes, I had my profile on every portal, I would say, on Indeed, Gulf Talent, Naukri Gulf, so everywhere. Also I used to take advice from my career cell जो मेरे university में था, तो वो वहाँ भी कुछ लोग थे जो help कर देते थे, हमारे resume revamp, career fairs होते थे. So that's how, yeah, I had my profile on every platform. Yeah. Great. और ये जो cold calling वाला आपने share किया point कि you have been calling to the institutes and उनके बारे में. Similarly, हमारे नवाफिज में फिजा है. She has also similar strategy और उन्होंने भी same strategy apply करते हुए she grabbed many opportunities. But जैसा कि आपने highlight किया, to try that strategy, you must have good communication skill, you must have good confidence, definitely. and other things. So ये point मुझे you are the second success story I can say जो जिसने similar strategy बताई है कि you used to call and then with your communication skills you build the confidence. और the other thing which you did के volunteer role play करके आपने जो है अपने आप को prove किया. It was also positive approach also. इनकी जो पॉजिटिव अप्रोच है उनकी वजह से भी, क्योंकि नॉर्मली जो स्किल्स होते हैं लोगों के पास, कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच नहीं होती, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इतना ज़्यादा जो है पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते. सो मैं वो चीज़ भी आपकी ऐड करना चाहूँगा कि ये दिस इज वन ऑफ योर क्वालिटीज और स्किल्स में भी आपकी जो डेफिनेटली पॉजिटिविटी तो मस्ट है, इट्स अ मस्ट है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि आपने नवाफिज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और आप इसको कहाँ से आइडिया होगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऑडियंस के कमेंट्स ले सकते हैं. मैं पढ़ लेता हूँ. देयर इज अ कमेंट फ्रॉम अनीशा मोहन. सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी. एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ हिडन स्ट्रगल बिहाइंड देयर सक्सेस that people barely know. There is so much to learn from you. Thank you very much. This is from Anisha Mohan, is actually also one of the Navafiz star. और उनकी तरफ से ये comment है. Now moving on to my question कि नवाफिज का आपको कैसे information मिली and how did you find it? Actually, Aqib bhai, this is a very, I would say, interesting story, and I would be very honest over here. Achha, Usman jo hai, my husband, actually, he knew about Navafiz and he heard about Navafiz from somebody. So we were searching for jobs, you know, and he said कि Zoya, Navafiz के sessions होते हैं Pakistan Embassy में, Abu Dhabi में, and different Emirates में, तो I'm going to attend their session now for the very first time. So if you remember, I wasn't part of the very first session that he attended. I wasn't with him. So उन्होंने मुझे बताया, I was already doing my MBA. It is I'm talking about last year. तो मैं इतनी committed थी, तो to be honest, and I'm sorry for that, I wasn't really interested. You know, ये होता है. तो मैंने कहा अच्छा होगा, ठीक है, it's fine. क्योंकि वो आप एक struggle से इतना गुजर चुके होते हैं ना, तो वो आपको लग रहा होता है कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं होगा. So you know, let's see.
तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ, नेक्स्ट टाइम आई विल सी। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा इस तरह से इग्नोर कर दिया। Next time, he said, Zoya, you must go. It's a very good platform ना, जिस तरह से वो लोग चीजें बताते हैं, it will really add to your learning. मैंने कहा ठीक है, that's fine. Second time मैं आपके sessions में आई. And then when I came to your sessions, and then when I came to know about this LinkedIn strategy and job searching strategy, resume, I remember जो ये Hamad हैं, Hamad Sayyed, Fizza Fatima, you were there. So the way you guys welcomed us, the way you guys were telling about all those things, it really, it kind of like broadened my horizon. मुझे तो वो चीजें बिल्कुल नहीं पता थी. I would definitely recommend anybody to go to Navafiz, and also Thank you so much for the appreciation. To you guys. I'm very thankful to you guys for that. I would like to add one question here, so you can continue. You can carry on. Sure. क्वेश्चन ये कि आपके व्यूज क्या है नवाफिज के बारे में, और नवाफिज जो है आपने नवाफिज को कैसे पाया, कितना यूजफुल हो सकता है जॉब सीकर्स के लिए? जी बिल्कुल, वही चीज है कि जब मैं आई और जब मैंने आप लोगों को देखा, आप लोगों ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी, द थिंग इज दैट लिंक्डइन मैंने कभी इस तरह से यूज नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ शायद व्हेन आई डिड माय बीबीए एंड देन आई स्टॉप्ड इट, तो वहां ये था कि फॉर लाइक अ फ्यू मंथ्स व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप्स, तो मैंने लिंक्डइन को थोड़ा सा यूज किया, बट आई डिड नॉट फाइंड इट यूजफुल। वो इसलिए नहीं कि वो लिंक्डइन यूजफुल नहीं है, वो इसलिए कि मेरी अप्रोच ठीक नहीं थी लिंक्डइन यूज करने की। उसके बाद मैंने कभी यूज नहीं किया। आफ्टर लाइक 4-5 years आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन, जस्ट राइट आफ्टर आई मेट लियाकत अली एंड यू गाइस। जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि लिंक्डइन को किस तरह से यूज करना, ऑप्टिमाइज करना, टॉकिंग अबाउट हेडलाइंस एंड पिक्चर्स एंड वीडियोस, जो कंटेंट हम शेयर करते हैं, I started doing that जब मैंने अपना MBA खत्म कर लिया। I had a lot of time. I said कि why not to share my things, मेरे articles भी हैं, I like to write as well, I like to speak as well। तो वो जब मैंने करना शुरू किया और जब मैंने अपनी अचीवमेंट्स शेयर करना शुरू की, तो आई स्टिल रिमेम्बर मेरे कॉन्टेक्ट सिर्फ 30 थे शायद इन माय नेटवर्क, एंड इट स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड पहले मैं लोगों को रिक्वेस्ट भेजती थी, अब लोग मुझे भेज रहे होते हैं। this is the reality. मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे नहीं समझ आती थी कि क्या हो रहा है। एंड इवन आई विल टॉक अबाउट दैट कि the way I used to approach people, it was same जैसे नॉर्मल बंदा करते हैं, just resume भेजा, एक लंबा सा मैसेज टाइप किया, I want to search for a job, if you have any vacancy let me know this। I wasn't getting response, so I was thinking कि मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। Still there were some people who were responding to me, and I would be really thankful to those people, क्योंकि आज अगर मुझे कोई ऐसा मैसेज भेजता है तो मैं नहीं रिस्पॉन्स देती, बट उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे रिस्पॉन्स दे देते थे, बट यस कि मुझे भी नई चीजें पता थी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई लर्नड अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम यू गाइज, फ्रॉम अदर इन्फ्लुएंसर्स जो लिंक्डइन पे हैं। आई फॉलोड देम, आई सॉ देम, आप लोगों की वीडियोस देखी, आप लोगों के सेशंस में पार्टिसिपेट किया। एंड ऑल्सो आई वुड से है कि जब मैं आप लोगों के साथ एफिलिएट हुई एज अ मेंटोर, तो उससे भी मेरी लर्निंग हुई है, क्योंकि जाहिर है जब मैं अब खुद एक वो गाइडेंस में आ गई हूँ, जब मैं उन्हें गाइड कर रही हूँ जॉब सीकर्स को, वो एक पूरी स्ट्रैटेजी मुझे समझ आ रही है। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं होंगे आपको नहीं समझ आएगा, वो लर्निंग आपकी बिल्कुल डिफरेंट होती है जो आपने चीज सुनी होती है। सो दैट्स हाउ आई हर्ड अबाउट नवाफिज, एंड that was my learning basically that I had from Navafiz. So thank you very much. बहुत ज्यादा प्राउड हुआ था कि हम प्राउड फील करते हैं बकायदा कि आप जो है यू आल्सो member of our team. So नवाफिज की आप मेंटोर भी हैं, एज एन एडमिन भी हैं, टीम मेंबर भी हैं, जो आप दूसरों को गाइड कर रही होती हैं, क्योंकि आप जैसे प्रोफेशनल्स जब आते हैं तो एक वैल्यू एडिशन होती है जो कि एक प्लेटफॉर्म को भी बूस्ट करती है। इसके अलावा जो है साथ साथ जो आपकी एफर्ट्स होती हैं, डेडिकेशंस होती हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, तो उसमें हमें भी खुशी होती है, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो भी इनकरेज होते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा काइंड ऑफ टफ है, एंड समटाइम इट कुछ लोगों के वर्स्ट एक्सपीरियंस भी होते हैं, स्पेशली बिकॉज जितनी भी पब्लिक डीलिंग टाइप रोल होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, यू फील समटाइम, क्योंकि पांचों उंगलियों की तरह 5 डिफरेंट तरह के एटीट्यूड होते हैं, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। तो आप जब डिफरेंट जॉब सीकर्स के साथ और डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ डील कर रही होते हैं, तो यू हैड एनी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस और समथिंग व्हिच रियली मेक्स के यार ये क्या है?
Any worst or most challenging experience वो आप share कर सकती हैं? Okay, the thing is that I feel कि मेरा वैसे पर्सनली कोई ऐसा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं है कि जहाँ मुझे किसी जॉब सीकर ने जैसे अप्रोच किया हो गाइडेंस के लिए and I felt कि what is this the way you said, but I would like to mention here one thing with reference to LinkedIn. अगर LinkedIn पे मुझे कोई मैसेज करता है, you know, जॉब सीकर ही है and you know एक क्वेश्चन मार्क से भेज रहा है या सिर्फ हाय भेज रहा है and then for 2-3 days they are lost, अब मुझे फिर कुछ नहीं पता, या फिर वो मेरी पिक्चर पे कमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट आके, आई वुड रियली लाइक टू मेंशन दिस थिंग क्योंकि वो पर्सनल हो जाते हैं, यू नो, सो दिस आई यू नो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। और आई जस्ट वांट कि जब आप देखें लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, आप प्रोफेशनली लिंक करें प्रोफेशनल्स के साथ, देयर इज अ वे टू मैसेज एवरीवन। डोंट थिंक कि आप किसी के साथ पर्सनल हो सकते हैं या आप उनकी फैमिली के बारे में पूछना शुरू करते हैं, आप ये पूछना शुरू कर दें कि वेयर आर यू फ्रॉम या यू लुक यू आर फ्रॉम देयर, दिस काइंड ऑफ मैसेजेस। if you are sending this kind of messages, the first thing is that you are spoiling your image in front of that professional, ठीक है, LinkedIn पे, this is the first thing. Secondly unprofessional attitude, right? Unprofessional attitude, and दूसरा ये कि आपको कभी भी reply नहीं मिलेगा उस पे, you won't get a reply, so you're just wasting your time. So this I would say that this is challenging for me still. This is, I usually get sometimes these kind of messages, but then I have a strategy to, you know, tackle with this thing. So alhamdulillah, it's going good. So that's all I would say about that. Alright. So अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, अच्छे काम भी करते हैं बुरे काम भी करते हैं। जो अच्छे लोग हैं जिस तरह से कोई सदका दे के कोई खैरात दे के खुश होता है, कोई जो है किसी की मदद करके खुश होता है, कोई किसी को गाइड करने से खुश होता है, कोई किसी से इंफॉर्मेशन शेयर करने से खुश होता है, तो डिफरेंट जो है वो उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनमें इनको एक सोल सेटिस्फैक्शन मिलती है। सो मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी और मोटिवेट? ठीक है, अच्छा, मेरा भी कुछ इसी तरह है। अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ और यू नो आई गेट अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम देयर साइड, दे फाउंड अ जॉब या उन्हें किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट फील हुई है उनकी पर्सनालिटी में या उन्होंने इंटरव्यू पास करी है, लेट्स से आई हैड सम पीपल हु कॉन्टेक्टेड मी ऑन लिंक्डइन एंड आई वाज जस्ट बिफोर इट, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर माय परसूट पाथ, तो मैं उस वक्त भी कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन में थी, मैं उन्हें गाइड कर देती थी, तो दे सेड के दे पास देयर इंटरव्यू विद फ्लाइंग कलर्स। तो जब मुझे ये पता चलता है तो इट इज एन अचीवमेंट फॉर मी एंड आई फील रियली गुड एंड मोटिवेटेड। सो यस, दिस इज द थिंग। दैट्स ग्रेट। अभी हम थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं जो लाइव चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाबर अली जस्ट सेइंग वेलकम कैप्टन लियाकत अली एंड जोया उस्मान इन द हॉल ऑफ फेम। Thank you, Babar. And from Maha Mujahid, just more power to you. From Yusuf Jamil, he's saying to Wasim, welcome Wasim. And we have Assalamu alaikum from Sayyida Fawzia. Maybe you know her, I don't know. Then from someone, Abid Ghani, he's saying Masal Khair. Masal Khair mean Wasim can explain what is the meaning of Masal Khair. That's the greetings, good evening. So you can answer. Thank you very much. Masal Noor in reply. Okay. Thank you. Actually, I think he's Arabic speaking, and he is maybe not able to understand what we are saying. So he's just asking. And even I'm not able to understand what he is saying. So it's two-way actually. Yeah. He's asking what's the subject we are discussing about or we are talking about. Okay. Ma modul bas. Okay. Right. Moving on to the question. Basically, आपने उसको somehow address किया है already. So I think from the LinkedIn optimization point of view, you have already highlighted कि आपने जो strategy है, जो contact करने की और जो वो message draft करते हैं, typical certificate अपना CV attach किया और typical message attach किया और send किया, उस strategy को आपने advise किया. In addition to that, if any point you want to add with reference to LinkedIn optimization,
उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने अपने स्टार्ट की जिससे मुझे सक्सेस हुई वो यही था कि पहले मैंने अपनी अचीवमेंट स्टार्ट की शेयर करनी। जो मेरे ऑनर्स हैं या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो मैंने स्टार्ट किया। उससे मैंने देखा मुझे एकदम से बूस्ट मिलता है नेटवर्किंग में, मेरे कॉन्टेक्ट्स एंगेजमेंट जरा ज्यादा बढ़ती है। देन आफ्टरवर्ड्स आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो। तो एक दिन मैंने अपनी वीडियो बनाई। मेरे भी पास बहुत ज्यादा फियर्स थे, बहुत ज्यादा था कि पता नहीं किस तरह के कमेंट्स आएंगे, क्या ऑडियंस का रिस्पॉन्स होगा। बट देन वही बात है कि आई ओवरकेम ऑल माय फियर्स और मैंने बस बना दी और शेयर कर दी एक दिन। तो आई हैड बोथ टाइप ऑफ फीडबैक्स। मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, ज्यादा पॉजिटिव थे, नेगेटिव भी आए, आई वुड एक्सेप्ट दैट। बट ये कि मैं मोटिवेट रही और मैं करती चली गई उसको। पहले मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई, अपनी सोलो वीडियोस दी डिफरेंट कंटेंट्स पे, एचआर के, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमेस पे, करियर गाइडेंस पे। एंड देन मैंने डिसाइड किया, जब ये लॉकडाउन का एक फेज स्टार्ट हुआ उस पे भी मैंने सोचा कि वी हैव different ways to use even this time period in a positive way. So then I started to interact with people from different industries, स्पेशली फ्रॉम दैट इंडस्ट्री जहाँ मुझे करियर गाइडेंस में, क्योंकि मुझे शौक है, तो मैंने डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट किया, उनके साथ सेशंस किए वाया जूम, and it was very productive. I really learned a lot from them. It was a kind of like two-way learning, और उससे आपके connections भी, मेरे connections भी build हुए, networking भी हुई. And again, it was another strategy that I did, और उससे एकदम से मुझे boost मिला. People started getting engaged with me, मुझे follow करने लगे. So yes, this was my initial, I would say, step-by-step LinkedIn optimization मेरी strategy थी. Okay, so I'll move on to the next question. वो ये है कि जैसा आपने माशाल्लाह आप जिस तरह से एक स्टार्ट लिया यहाँ पर, आपने करियर का आगाज किया, उसके बाद आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट टाइम व्हेन यू अटेंडेड अ सेशन, करियर गाइडेंस सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय नवाफिज एट अल ट्रेनिंग सेंटर. सो वहाँ जब हमारी मुलाकात हुई थी, आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव भी थी उस वक्त, और माशाल्लाह आपकी एक क्वालिटी भी है कि आप रिसर्च बहुत अच्छी करती हैं. काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपके अनअवेयर होती हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट होता है, तो आप रिसर्च करके उसके बाद फिर आप चीज़ों को बिल्ड करती हैं, इम्प्रूव करती हैं. तो उसमें जैसे आपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को आपने यूज़ किया, नवाफिज के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, पर्सनल ब्रांडिंग भी आपने बहुत वर्किंग की, और जिसमें आपने बाद में आगे चल के जो है आपने एक फर्दर गोल अचीव करने में आप कामयाब हुई. सो ये जो आपने जब लिंक्डइन पे, यूट्यूब या वाया जूम, जब आपने डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपने इंटरव्यूज किए और उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन चलती रही, तो आप कह सकते हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दोस एक्सपर्ट्स? His experience was very good. In fact, I would say क्योंकि I interacted with people who were from different backgrounds, different countries से थे. I interacted with founders of big companies जो कि अपनी established उनकी companies हैं, basically career guidance की mainly वही लोग थे. But it is not just that. मैंने कुछ ऐसे लोगों के साथ भी sessions किए जिसमें सदफ तौकीर हैं, जिसमें नाहिद खान है, ये थे कि जो NLP प्रैक्टिशनर्स हैं, माइंडसेट कोचिंग पे बात हुई. तो उससे ये मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछते हैं तो वो ये था कि लर्निंग एक तो प्रोफेशनल रेलेवेंट जो चीजें हैं उन पे भी हुई, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रेलेवेंट जो चीजें हैं डेफिनेटली उस पे भी हुई. सो आई वुड से कि इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. Definitely. And I would also suggest that if somebody is looking to, optimize LinkedIn in this way, definitely give it a go and go for it. It is a great strategy that you can adopt if you are good in communication and would like to यहाँ पर आपकी एक बात को हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हुई, वो ये कि देखें, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो प्रीवेलिंग सिचुएशन चल रही है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, बहुत सारे लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे या फिर बोर हो रहे थे. ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव जो चीज़ें हों उनको इम्प्रूव करने के बजाय वो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे. इस सिचुएशन में आपने माशाल्लाह जिस तरह से आपने वीडियोस बनाई, एक दैट्स आल्सो क्रिएटिव आइडिया कि आपने वीडियोस बनाई, आपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया. सो मैं भी एक ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस पीक टाइम में या इस प्रीवेलिंग सिचुएशन में बजाय ये कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जैसे पर्सनल ब्रांडिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, करियर गाइडेंस है. उसमें अपनी जो स्किल्स हैं किस तरह से इम्प्रूव करनी चाहिए, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. बिल्कुल, I would totally agree. ग्रेट.
मूविंग ऑन, हमारे पास क्वेश्चन है नीतू अंजार का. बेसिकली इवन हम भी सेम क्वेश्चन पूछने वाले थे. इट्स फ्रॉम नाउ नीतू आल्सो, कि बेसिकली आपने जो आपका जो बिजनेस आइडिया है, जो बिजनेस प्लान है, वो उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी, एंड हाउ यू स्टार्टेड इट, एंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन. ओके, सो बेसिकली इंस्पिरेशन तो ये थी कि एक तो ये कि आई ऑलवेज लव टू मेंटोर पीपल, टू गिव देम गाइडेंस, क्योंकि जिन चैलेंजेस से मैं खुद गुजरी हूँ, तो आई लव टू टेल पीपल अबाउट दैट, कि उससे शायद उनकी भी कुछ लर्निंग हो जाए, क्योंकि मैं भी खुद काफ़ी चैलेंजेस से गुजर किए और मैंने अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया, स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव किया, थिंग्स लाइक दैट. एक तो ये था, और दूसरा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है ऑलरेडी, सो इट काइंड ऑफ लाइक एडेड टू इट. सेकेंड थिंग जो इंस्पिरेशन है वो ये है कि जो गाइडेंस की जहाँ बात आती है, जैसे मुझे नवाफिज के थ्रू गाइडेंस मिली, और मैंने वो एक जो see, I had the skills, I had the abilities, I had capabilities, knowledge, लेकिन वो जो एक अप्रोच होती है ना, वो अप्रोच I was lacking. तो वो चीज जो है वो मुझे आप लोगों से गाइडेंस से मिली. मुझे पता चला कि ओके, सो दिस थिंग आई हैव टू ट्वीक. जब वो उसे मैंने ट्वीक कर लिया, सो देन आई वाज गुड टू गो. तो जब मैं अपने साथ ये चीज मैंने देखी, एंड दैट्स हाउ आई रिवैम्प्ड माय एंटायर करियर एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वहां फिर मैंने यही सोचा कि आई थिंक पीपल आर लैकिंग ऑन दिस थिंग. उनके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, बट उनको गाइडेंस नहीं है. उनको ये नहीं पता कि अपने आप को एक्सपोज कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट किस तरह का शेयर करना है. तो ये बेसिकली इट वाज माय इंस्पिरेशन बिहाइंड माय बिजनेस आइडिया. सो दैट्स हाउ आई केम अप विद इट, कि if I can help as many people as I can through this platform, I would definitely love to do it. So I'll move on to the next question. Why did you start that My Pursuit path? और आपके goals This is क्या the same reason. This is the same reason. This is the same reason, right. Yeah. Career पहले guidance. कि हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, we are almost reaching 45-minute time of our session. I will just go through quickly through some of the comments. एक्चुअल में कुछ लोगों के जो कमेंट्स हैं वो रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल दे आर आस्किंग. तो इफ यू कंसीडर के हम आंसर कर सकते हैं if in a reasonable time, तो I think we can answer. Otherwise we can just refer them के, क्योंकि I know you have already your many videos on your YouTube channel जिसमें बहुत सारे टॉपिक आपने ऑलरेडी कवर किए हैं. इवन नवाफिस पे भी डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं, but still let's see. Yes. तो यूसुफ जमील की तरफ से थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि if someone needs to start a new career other than his profession, what should he do for the new role? Normally, basically, if I know Yusuf Jamil actually since few days, I know him from the long time, but इनका actually issue क्या है कि इनका जो बेसिक प्रोफेशन है वो टीचिंग में की तरफ रहे हैं, बट अभी क्योंकि ये उस रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो अकाउंट्स की तरफ काइंड ऑफ मूव करना चाह रहे हैं. तो आई थिंक वसीम क्योंकि अकाउंट्स रिलेटेड है, मे बी वसीम भी थोड़ा इस पर रोशनी डाल सके, बट यू आर एक्सपर्ट. मैंने सिर्फ एक या दो जुमले कहना चाहूंगा कि नॉर्मली मैंने यूसुफ से बात की थी. आई थिंक ही अटेंडेड अ सेशन एट एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान फ्यू मंथ्स बैक. सो इस प्रॉब्लम ये है कि अगेन वही चीज़ आती है कि आपका प्रोफेशन एक होता है, ठीक है. If you're not focused, then it's difficult to obtain a position. It's difficult to secure an opportunity here. जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो. यहाँ पर ये है कि अब जो यूसुफ जमील का प्रॉब्लम है वो ये है कि ही वर्कड एज अ प्रिंसिपल इन वन ऑफ द स्कूल्स और टीचिंग में भी उसने काम किया था. यहाँ पर जब आए तो वो अकाउंट्स की जॉब ढूंढ रहे थे, ठीक है, जो कि आई डोंट नो कि इनका कितना एक्सपीरियंस है. जब मैं इनका रेज्यूमे गो थ्रू किया तो आई कुड नॉट फाइंड प्रॉपर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स में. कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से ये इनको हर्डल्स आ रही थी, गैप आ रहा था. तो कुछ आफ्टर फ्यू मंथ्स इन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया. तो मैं इनको यही सजेस्ट किया कि आप सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करें कि आपने किस जगह जाना है, कौन सा प्रोफेशन आप यानी फाइंड आउट करना चाहते हैं या उस प्रोफेशन की तरफ जाना है. अकाउंट्स है तो आपको यू मस्ट हैव स्किल्स इन अकाउंट्स एंड एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी. अगर नहीं है तो फिर आपका स्कूल का एक्सपीरियंस है एज अ टीचर, तो उसका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है स्कूल्स में अक्रॉस यूएई. तो ये चीज़ें जो है वो उनको सबसे पहले अपना
माइंडसेट क्लियर करें, उसके मुताबिक जो चीज़ें इनको आती हैं वो मेंशन करें रेज्यूमे में, और उनके लिए फिर इजी हो जाएगा जॉब सर्च करना। बिल्कुल, definitely. I would just, Liaqat bhai, I would like to add over here, it's somehow relevant to this, कि it's a message for everyone as well, कि there is a difference between a job and a career. Job आप करते हैं earn करने के लिए, you earn bread and butter for your family, आपके पास liabilities होती है, responsibilities होती हैं. जब आप career की बात करते हैं ना, तो career एक ऐसी चीज है जो कि you love to do it. वो आपकी personality के साथ align होनी चाहिए. देखिए, हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस है, हर इंसान की अपनी कैपेसिटीज है. अब एक इंसान है, वो 9 to 6 की जॉब नहीं कर सकता, वो उस स्ट्रेस को नहीं ले सकता, राइट? वो एक माइक्रो मैनेज्ड एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता. सो आई हैव टू चूज माय करियर रेलेवेंट टू माय पर्सनालिटी. मैं किस एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट कर सकती हूँ, मैं किस तरह से उस चीज को लेके जा सकती हूँ, क्या मैं वो काम कर सकती हूँ या नहीं. दैट इज माय करियर एंड दैट शुड बी इन लाइन विद व्हाट यू आर एक्चुअली. सो जॉब तो हम कर लेते हैं, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज एडवाइस कि हमेशा अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जो हम सॉट एनालिसिस की बात करते हैं, ये हमारे जो स्टेप्स हैं नवाफिज के, तो डेफिनेटली वी हैव टू डू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन. अब अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी क्या लिमिटेशंस है, क्या कैपेसिटी है, तो आप डेफिनेटली विल जंप इनटू समथिंग रॉन्ग, जो कि दैट इज नॉट मेंट फॉर यू. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू डेफिनेटली गिव योरसेल्फ सम टाइम, इंट्रोस्पेक्ट. आप सोचें उस पे, काइंड ऑफ लाइक ऑब्जर्व करें कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं. सो दैट इज ऑल आई वुड से इन रिलेशन टू दैट. Right. Next, ठाकुर, और बेसिकली जो मिस्टर ABDGNI है वो भी इंग्लिश में करने का सोच रहे थे, लेकिन हमारे इंग्लिश में सेशन होते हैं जो टेक्निकल, our most of the technical sessions are mainly in English, but when we are into some kind of personal discussion or we are highlighting the achievements of some personalities, then we are normally going in Urdu, so our sessions are in the pattern like that. Then from Sadia Usmani, I want any job for Sadia Usmani for jobs. You can contact, register on Navafiz website, and then you can contact with Miss Neetu, or you can contact with me or Wasim Raja also via Navafiz website. You can register on www.navafiz.com, NAVAFIZ, and then we can proceed further as per the Navafiz support system. And there's a message, there's also एक फीचर है जो कि नवाफिस चैट डिस्कशन है, डिस्कशन बोर्ड, सो यू कैन लीव योर मैसेज. सादिया को मैं कहना चाहूँगा कि अगर रजिस्टर करने के बाद अपना मैसेज जो है वहाँ पर छोड़ सकती हैं, सो कोई भी मेंटर होगा वो आई थिंक दे कैन गेट बैक टू हर. Correct. Next question is addressed to Zoya. What is the best way to approach a professional on LinkedIn? Sure. The best way is that first you have to follow that person जिसको आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, उसको फॉर सम टाइम ट्राई टू फॉलो दैट पर्सन. उनकी एक्टिविटीज देखें, ये देखें कि वो किस तरह के कंटेंट में एंगेज्ड हैं. लाइक लेट्स से कि दे आर मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोस और वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, सेमिनार्स में इन्वॉल्व हैं. देन ट्राई टू रेफरेंस दैट in that message कि आपने उनके सेशंस देखे हैं, आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, आप उनका कंटेंट देखते हैं, इट्स वेरी प्रोडक्टिव कंटेंट और इट्स एडिंग टू योर लर्निंग, एडिंग टू योर नॉलेज. तो इस तरह से जब आप किसी को अप्रोच करेंगे, डोंट डायरेक्टली से दैट यू आर लुकिंग फॉर जॉब या इफ यू हैव एनी वैकेंसी और रिज्यूमे अपना भेज दिया. नो, दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी. जस्ट फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड द रिलेशन एंड देन वंस यू फील के, क्योंकि वो चीज आपने करनी है, आपको पहले रिस्पॉन्स चाहिए उनका, तो आपको रिस्पॉन्स लेने के लिए यू हैव टू ग्रीट a person first rather than just coming to the point and nobody is interested, then they don't know you, so why would they just reply to you regarding resume. So first you have to greet them. तो greet करें, उन्हें बताएं कि आप उन्हें क्यों फॉलो कर रहे हैं, किस तरह, क्या आपका मकसद है, and then after a few days you can talk about the resume and jobs, everything. So, right, that's a great idea. I think we will just take 2 more questions and then we will wind up the session because already हमारे पास टाइम काफी ज़्यादा हो गया है. Before moving on to comments from a technical question from one more Mr. Hamza Zafar, I just want to ask, आपकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन कौन सा था? मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन कौन सा है?
Okay, so other than wedding day. मेरे भी ज़हन में ये है। Yeah, right. There's I would say just okay. When I moved to UAE, so that I would say कि दिन तो नहीं है, but the phase that वो जो एक phase है वो यादगार है क्योंकि जब मैं एकदम से UAE market में आई and I came to know about new culture or वो I visited different places, so that was a kind of memorable time for me and I'll never forget that. So yeah, so that's all I can say about that. एक मैसेज मेरे पास भी आया है, इस वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स, वो ये पूछ रहे हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? ओके, मेरी हॉबीज जो है बेसिकली वो स्पीकिंग है. दिस आई लव टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव टू पेंट एज वेल, जो कि अभी मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ है, बट आई एम ऑल्सो इनटू मेकिंग फ्लायर्स और प्लेइंग विद कलर्स. और इसमें मुझे ड्रेस डिजाइनिंग का भी शौक है और क्रिएटिविटी की तरफ मैं हूँ, पेंटिंग. So yeah, these kind of things I'm really into. So yes, and apart from that, I'm into speaking as well. तो अब मुझे कोई भी topic मिल जाए, so I would love to talk about that. I would never look at the time even कि मैं कितना बोल रही हूँ, but that is something I love to do. So you can say that is my hobby. अभी तो एक और हॉबी आपकी इसमें ऐड हो गई कि कैरियर गाइडेंस जो है, जो कि आपने स्टार्ट किया हाँ, वो प्रोफेशनल हो गया ना वो थोड़ा सा. तो दिस इज द पर्सनल, यानी जो नॉर्मल एक अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल एंड boring things that I do, you can call it. So ये you are doing with the personal, right? Yes. So this is the thing. Right. Next question हमजा जफर की तरफ से है कि what is the appropriate answer to interviewer asked about the candidate weakness. हमजा बेसिकली वीकनेस, आप जब आपने एक तो एक्चुअल वीकनेस है वो आपको अपनी रियलिटी में पता होना चाहिए कि मेरे ये वीकनेस है या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो कि लिस्ट आपके पास प्राइवेट में पर्सनल में होनी चाहिए. लेकिन जो जब आप इंटरव्यू की फेज में हो तो थोड़ा सा आपको डिफेंसिव मोड में इसको फ्रेज करना होता है. एंड यू हैव टू टेल योर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, वो एरियाज जो अभी आपने 100% अचीव नहीं किए एंड यू आर ऑन द मिडल वे और हाफ वे, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन द इंटरव्यू. दिस इज व्हाई मैं हमजा को ये कहना चाहूंगा कि इसको ओवरकम करें अपनी वीकनेस. जब भी आपको आपसे पूछी जाए क्वेश्चन के इंटरव्यू के दौरान, तो आप उनको ये कर सकते हैं कि जो आपकी वीकनेस है उसको आप ओवरकम करें इनटू द स्ट्रेंथ. और आपने ये कभी भी नहीं बताना कि यू आर इमोशनल पर्सन या क्या कहते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं, हाई टेम्पर होते हैं या फिर जल्दबाजी फैसले करते हैं. इस किस्म के जो दीज आर नॉट वीकनेसेस, एक्चुअली ये आपकी पर्सनल है. आपने प्रोफेशनली बताना है जो कि आपको ओवरकम करे स्ट्रेंथ में. जी जोया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इस आंसर जी, पे? मैं भी बिल्कुल आप लोगों से एग्री करूंगी. मैं यही कहना चाहूंगी कि इफ यू आर टेलिंग अबाउट अ वीकनेस, इट्स ऑलराइट बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव गॉट वीकनेस. तो बट आप वीकनेस बता भी रहे हैं, ऐसी बताएं जिसमें देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. और फिर उसके साथ ये भी बताएं कि यू आर वर्किंग ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट एज वेल and what strategies you are adopting to improve that weakness of yours. Sirf weakness bata ke we don't have to end that discussion. We also have to tell that ke but you are working on that by doing this activity. So this is a proper way to answer that in HR. Basically हम यही guide भी करते हैं लोगों को. जी. Great. Overall it was a very great session. I really enjoyed और टाइम का पता भी नहीं चला और ऑडियंस की एंगेजमेंट भी काफी जबरदस्त रही. एंड स्टिल वी हैव मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर इन क्यू, बट ड्यू टू टाइम लिमिट्स आई जस्ट नीड टू वाइंड अप इट. सो आई वुड जस्ट लाइक कि आपकी तरफ से एक फाइनल वर्ड्स मैसेज फॉर व्यूअर्स जो है इन जनरल मैसेज और एनी professional message, whatever you want to share. Right. Yes, definitely. I would like to say, first of all, to everyone that stay positive and keep on searching your jobs, whatever, efforts you are doing on your part. For now, at least, जो हमारा phase इस वक्त गुजर है COVID-19 का, we all know that's a difficult time period, but stay motivated. This is the first thing. Second thing, I would say that don't ever feel insecure about anything. Don't, put your weakness as a hurdle in your career growth.
आपकी कोई पर्सनालिटी से रेलेवेंट कोई बात है, यू नो, मे बी आपने किसी का कमेंट सुन लिया है, या आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं बोलते और आप उससे डिमोटिवेट होके बिल्कुल ही बैठ जाएं और आप उस पर बिल्कुल इम्प्रूव ना करें, सो दिस इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि देखें, आज जो भी सक्सेसफुल है ना, वो इन अप्स एंड डाउन से गुजर के ही यहाँ पहुंचा है। बहुत मुश्किल वक्त से लोगों की बातें भी सुनी हैं, हर्डल्स भी पास किए हैं, दैट्स हाउ दे आर हियर नाउ। सो आई वुड से कि ऑलवेज have a strategy to improvise on those things rather than कि आप बस डर के बैठ जाए कि नहीं, we cannot face people, हम कैमरा शाय हैं, हम वीडियो नहीं बना सकते, अगर इस तरह के कमेंट्स आ गए, we don't have to think that. So ये एक चीज है। दूसरा I would say कि always stay positive and surround yourself with positive people always. We don't have time, you know, to listen to negativity या इतना लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि अब जो है ना, इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड वी हैव टू ऑलवेज सराउंड आवरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। दिस इज माय स्ट्रेटजी एंड आई हैव आल्सो मेड वीडियो ऑन दैट थिंग कि हमेशा यही कोशिश करें कि लोगों के साथ पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें लोगों के लिए, आपके साथ खुद अच्छा होगा। और अपने सर्कल में भी उन्हीं लोगों को रखें जिनसे आप मिल के या जिनकी बातें सुन के आपको खुशी होती है या आपको किसी ना किसी तरह की मोटिवेशन मिलती है। अपने आप को फ्रस्ट्रेट करके उन लोगों के साथ रह के और यू नो जस्ट, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ऑलवेज यू नो टेक सम एक्शन ऑन दैट थिंग in a strategic way, in a professional way. I'm not saying you have to fight with such people, yeah, but at least you can do something about it, because ultimately you have to take care of yourself, both mental health as well as physical well-being. अगर वही आपकी stress free आप नहीं होंगे, so you cannot achieve anything in life. This is all I would like to say. थैंक यू सो मच, दैट्स ऑसम। और आपके जो गोल्डन वर्ड्स हैं वो याद रखे जाएंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, वो भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। जो आपकी सजेशंस हैं, आपका जो मैसेज है एक जो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, तो इंशाल्लाह आई होप कि सब लोग जो है इन चीज़ों को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच। Once again, I would just say thank you Zoya, thank you Wasim for the support. और व्यूअर्स से ये मैं कहना चाहूँगा कि कीप इन टच विद नवाफिज यूट्यूब हॉल ऑफ द फेम सीरीज में आप किस पर्सनालिटी को आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं, उसका नाम आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। फर्दर हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग टू आवर डिफरेंट सेशंस। हमारे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट सेशंस होते रहते हैं। सो स्टे इन टच और कीप सपोर्टिंग एंड हैव गुड टाइम और अल्लाह हाफिज़। Thank you, Zoya, for your valuable time.